we are starting with this course now. And the first chapter is purely theoretical and it's introductory. So it has nothing to do with your cost concepts. It has to do with management most of the times. So we will be actually revisiting those concepts of management which you have already studied in the previous courses of management, most probably accounting. तो ये सारे के सारे basic concepts हैं जिसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. So now, let's talk about imports and exports of a country. Okay, for that matter, take any country. Now we've seen that with the passage of time, the imports into a country are actually rising, and they are from different countries. So different countries are actually exporting goods to your country or to any other country. Now same goes with the exports. The exports are also increasing. So what actually we are witnessing? We are witnessing something, a concept which is actually called as globalization. So now the world is becoming a global village. We have more imports, we have more exports, and thanks to this thing, internet. Now things are very easy. You cannot imagine life without internet. Since I've seen a life without internet and I've lived that life, so now I can see how things were before it. There were restrictions. You could not export things easily. You could not import things easily. You could not talk to people on the other side of the world and you could not communicate with them. But now it's easy. All you need to do is come up with an app, Google, WhatsApp, anything. And if you know that person, or even if you do not know that person, you can find people out. This is what I did. When I had my friends in different corners of the world, और मुझे नहीं पता था कौन कहाँ पे चला गया है, तो जब मुझे when I started using internet, I tried to find them out, and I did that last year. I did that within 20 minutes. Within 20 minutes, I was able to locate all of my friends, my batchmates from 1998. मेरे जितने भी स्कूल के बैचमेट्स थे सबको ढूंढा, सबको कॉल किया, सबको मैसेज भिजवाया बिकॉज वी वर अरेंजिंग अ डिनर. और आप नहीं मानेंगे, सुबह हम लोगों ने ये काम शुरू किया और रात तक डिनर अरेंज हो गया. एंड दोज ऑफ माय क्लास फेलोज और बैचमेट्स हु वर इन पाकिस्तान, हु वर इन पेशावर, दे वर विद अस ओवर द डिनर एंड वी वर हैविंग गपशप, गुड टाइम. So it's all you do, internet use. Now the internet has fueled this globalization by providing companies with greater access. So now you can access each and any country, you can access each and every product. You can buy from there, you can sell them products. So it's easier now. So that means now trade has become easier. Trade restrictions have gone down. Okay? World Trade Organization भी आ गई, WTO भी है, there are lots of other organizations who are actually supporting it. So इतनी treaties आ गई हैं, इतनी चीजें आ गई हैं कि ये सारी चीजें are becoming easier. Now you can even have customers in other parts of the world. You can have your employees in other parts of the world. Now this is a good thing. So you do not have to have a business over here and your employees over here as well. Your employees might be in some other corner of the world and they would be working for you. Okay? Outsourcing हो सकती है. आप अपने employees they can work from online. They can work from home. तो वो आपके लिए काम कर रहे होते हैं. And same goes for your supplier. So your supplier can be in US. Sorry, more practical would be your supplier who might be in China, your customer might be in US, and you will be running a business from Pakistan. So you can do that. Okay? So now you can understand why exports and imports have increased over the passage of time. The number of internet users have also increased over the years. And this is because it's easier and it's giving you more access. Now what is the strategy? Strategy, do you remember what's the strategy? याद होगा ना, मैनेजमेंट का कोर्स याद है? Yes, sir. ठीक है, अब हम दोबारा वो मैनेजमेंट की थोड़ी सी बातें करेंगे थोड़ा, so that we can link the management and accounting together, and then we can find out what actually is management accounting. Okay, so what is the strategy? Planning. Plan तो आप वैसे भी करोगे. So what strategy? Strategy is actually a Long term. हाँ, it's a bigger plan. ये overall plan है. So it's a game plan that enables the company to attract customers by distinguishing itself from its competitors. Now this is important. You need to distinguish yourself from competitors. Just like Abdullah said, कि iPhone जो है, Apple जो है, they come up with a high-end product. So this is in the mind of the customer that this product is expensive.
and they are willing to pay for it. And then all of a sudden, when after 1 or 2 years you bring the price down, so then the perception in their minds is कि 4,000 का product मुझे मिल जाएगा $1,000 में, so let's buy. In reality, उसकी cost शायद $1,000 से भी कम. ठीक? So it's all about distinguishing yourself from competitors. Now, the focal point of a company strategy should be its target customers. Who are your customers? Who are you targeting? Now, if Apple is targeting high-end customers, then there might be some other company, item, or Vivo, Samsung to chale, I would place it somewhere in the middle. But let's talk about the low end. Vivo, Itel. Now their focus is on another segment of customers. Now you can understand कि दोनों का focus ही अलग है. यानी दोनों का game plan ही अलग है. दोनों की strategy ही अलग है. So this is basically your strategy. Now how do you actually do it? आपके दिमाग में कुछ होता है. So what can be your strategy? आपकी strategy क्या हो सकती है? It can be customer intimacy strategy. It can be operational excellence strategy, or it can be a product leadership strategy. ठीक है? अब most probably I would say Apple is looking for product leadership strategy. Why? Because they are going for high quality products. So when you are looking for high quality products, so you are trying to lead the market in the product. So आप product quality को high end पे ले जाकर और उनको वो दे रहे हैं because you know your customers will go for it. But then there are people who would be going for a customer intimacy strategy. Now, customer intimacy strategy is where you respond to your customers. You are intimate with your customers. Okay? In the sense that whatever they need or whatever they want, you give them that. अब मैं जब बड़ा हुआ, शायद आपसे थोड़ा सा उसका छोटा होगा, और जब मैंने शेव करनी शुरू की, तो मेरे लिए Gillette Blue 2 was big thing. 2 blades हैं यार, 2 blades हैं, कितनी अच्छी शेव करेगा ये कितनी साफ शेव करेगा. उस वक्त because we were using single blades most of the times, and Gillette Blue 2 was a big thing. Then somewhere in 2000s, early 2000s, शायद that was the time when you were born, most probably. Yes. Yeah. So Mark 3, take or Mark 3, that was introduced. तो उस वक्त 3 ब्लेड को हम सोचते थे, हम कहते थे 3 ब्लेड, ये 3 ब्लेड क्या करेगा यार? And then there is no end to it. So actually you give your customers what they want. They need a clear shave, they need a closer shave, you give them that. Okay? And at times you would give your customers something which they might not even think of. Get a step ahead. आप उसे कहते हैं इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, इसका ब्लेड यूं करके मूव करेगा, इसका हेड यूं मूव करेगा, ये अच्छी तरीके से करेगा, कट नहीं लेकर आएगा, blah blah blah, and then you have those product innovations. Then there is operational excellence strategy. Now these are the people who are actually trying to have an excellence in operations. जो भी operations हैं, it can be product, service, customer service, it can be production, it can be marketing, it can be anything. So what they are trying to do over here is कि ये जो operations हैं, इन सबको वो low cost पर, they are providing that at a lower cost and are providing that quickly to the customers. So they are delivering products and services faster, more conveniently, and at lower prices. Now this is operational excellence. So when you are making a strategy, so most probably you will be following these strategies. और आप सोचते हैं कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं या कोई सर्विस दे रहा हूं, तो मैं किस चीज को, क्या मैं अच्छी से अच्छी सर्विस दे रहा हूं, और am I giving that to you at a lower price, or am I giving customers what they want? I'm listening to the customers कि वो क्या चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या एक्स्ट्रा चीज आ जाए और फिर उसको दे दें. I gave you the example of blades. Mobile phones is a good example. जब मैंने मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, once again I was in college, तो उस वक्त it was only for communication purpose. That's it. सिर्फ इस पे कॉल मिलती थी और बस. फिर उसके बाद म्यूजिक फोन स्टार्ट हुए, started by Nokia, and we were really surprised कि अच्छा म्यूजिक भी बजेगा फोन के अंदर. फिर कैमरास आने शुरू हुए, and we said अच्छा यार कैमरा, यानी कैमरा अलग से घुमाने की जरूरत नहीं, because we were used to have कैमरा अलग, फोन अलग और वॉकमैन अलग. There used to be Walkman at that time, जिसके अंदर हम कैसेट डाल के सुनते थे. ठीक है? तो अब सब कुछ, each and everything is inside one phone, and it's a very small one. आपकी पॉकेट में आ जाएगा. ठीक? So who could think of that? So you are giving
customers what they want, या आप चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज at a lower price, कम से कम कीमत में, अच्छी से अच्छा कम से कम कीमत. So you are not actually looking for the best quality, but you are looking for good quality at low prices. So you can follow any of these three strategies. Now, functions of management. You must be aware of these functions of management. सबको याद है? Yes, sir. Management का कोर्स सबका clear था? Yes, sir. सबका? Okay. So these are the functions of management. We have planning, directing and motivating and controlling. And once we are done with these three functions, four functions, तो मैं उसके बाद फिर आपको बताऊंगा how can we define management accounting. ठीक है? Accounting तो आपको पता है कि क्या है. And what is management accounting? फिर वो आपको बताऊंगा कि वो क्या है. And then we will see how management accounting is different from financial accounting. दोनों के दरमियान फर्क क्या है. ठीक है? Start करें? Yes, sir. Going good? तेज तो नहीं जा रहे? सही है? Okay. Let's start. Planning. G. So what is planning? Planning. So creating steps for our objective. How would you achieve? Won't that be directing? How would you achieve your goals? How would you achieve your goals? Again, you came up with your goals, huh? In the previous one. We said you must come up with a strategy. Okay? So, a company has a strategy कि ये काम करना है. Let's say आप कहते हैं कि मैं एक ऐसा मार्कर बनाऊं जो कि लिखे भी खूबसूरत और जो बिल्कुल नई तरीके से लिखे और उसको अगर मैं यूं टेढ़ा कर दूं तो वो ब्लू हो जाए, इस तरह कर दूं तो ब्लैक हो जाए, blah blah blah. So you are coming up with some new technology in markers, let's say. So this is your strategy to come up with something new. Okay? Now, how would you do it? How would you do it? ये तो आपने कह दिया. Now, for that you need to plan. Now, for planning, I would say अच्छा है, इसका एक तरीका तो ये है कि मैं जाकर बैठ जाऊँ लैब में और मैं इस तरह करूँ, इसको इस केमिकल को मिलाऊँ, उसको यूं कर दूँ, वो कर दूँ. So this is plan number one. And then I would say yes, लेकिन इसका एक और तरीका भी हो सकता है. मैं ये करता हूँ कि दो मार्कर्स को लेता हूँ, उसकी निभा खट्टी करता हूँ, फिर इसको यूं करता हूँ, यूं करता हूँ. So this is plan number two. And then I say नहीं, there is another third way to do it. So actually I come up with different alternatives. ठीक है? So now I've come up with different alternatives, and then I would see which alternative is closely related to my strategy or my game plan. ठीक है? मेरा objective कौन सा ज़्यादा अच्छा achieve कर सकता है? Select alternative that does the best job of furthering organization's objectives. ठीक? इसी strategy की basis पे I've come up with different objectives. कि ये काम है. अब ये इसमें से कौन सा प्लान होगा जो अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को कवर कर सके. फिर जो हो गया प्लान, अब मैं कहूँगा अच्छा, let's say I go for this plan. Plan number 2. Now, how would I actually do this plan? इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा यार, इसके ऊपर 2 रुपए इस पे लगेगा, 5 रुपए इस पे लगेगा, एक कंप्यूटर लेना पड़ेगा, लैब लेनी पड़ेगी, एक टेस्टिंग केमिकल लेना पड़ेगा, blah blah blah. So these are my costs. And then I would say अच्छा, then I would be able to sell it at what price, इतनी प्राइस पे बेच सकता हूँ. So these are my expected revenues. Now remember, all these I have not incurred yet or received yet. ठीक है? ना ये incur हुए हैं, ना ये receive हुए हैं. So all these are planned. And whatever is planned is actually budgeted. हमने कहा था ना कल कि budgeted is actually forecasted. याद है? Yes. So it's basically a forecasted. ये सब जो statements हैं, ये सब जो मैं भी कह रहा हूँ कि ये काम इतने पैसे लगेंगे, it's all forecasted. So you develop budgets to guide progress towards the selected alternative. So this is what planning is. Clear? Yes, sir. Clear है? Yes. It's all so far it's all a refresher. मैंने आपसे कहा था first chapter is all refresher. Yes. आपने जो चीजें पहले पढ़ी हैं उनको हम लोग refresh कर. Now let's move on to the second objective. ठीक है? Second function. जो किसी ने कहा था कि अच्छा हम किस तरीके से काम करेंगे. अब मैंने डिसाइड कर लिया कि what needs to be done. What needs to be done. अब लोगों को बताना है. किन लोगों को? To my employees, to people who are working for me. So I need to direct them. ठीक है? I need to direct them. Now directing and motivating involves managing day-to-day activities to keep the organization running smoothly. So I need to tell Abdullah कि उसने क्या काम करना है. I need to tell Abdul Qadir उसने क्या काम करना है. I need to tell the CR कि उसने क्या काम करना है. So now I'm actually directing each and everyone. आपका ये काम, इसका ये काम, इसका ये काम, इसका ये काम. ये जाएगा, ये केमिकल लेकर आएगा, ये इसको इकट्ठा करेगा, ये इसका वो करेगा और मार्कर हम बना लेंगे. ठीक है? So this is how it is done. Employee work assignments. I would assign work to each and every employee. And in case there is some problem, we would try and solve that. Okay? अब यहाँ से next काम शुरू हो जाता है, which is more like motivating.
I would keep on motivating my employees, अच्छा यार काम करें, अच्छा काम है, इस तरह करें, पढ़ें आप लोग, अच्छी बात है, आप पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जाएंगे. Conflict resolution in case there is some problem. CR जो काम कर रहा है, अब्दुल कादिर जो काम कर रहा है, उसमें conflict है, so they would come to me and they would say कि sir there is a problem, मैं जो काम कर रहा हूँ वो ये है, ये काम ये कर रहा है, so I would resolve conflicts, conflict resolution. Communications. अब ये सब should be coordinated. ये सारे काम तो अलग अलग हैं, लेकिन all of them are working to get this done, which is in order to get this objective, which is the strategy or the game plan of the organization. तो अब इन सबको coordinate करना है, इन सबको इकट्ठा करना है, तो हमें we need to communicate each and everything to each and everyone. तो सब employees को communicate करना पड़ेगा. So this is how I do directing and motivation. Clear? Yes. Okay. Let's move on. Controlling. Now this is an important function as far as management accounting is concerned. If you remember when we talked about budgets yesterday, we said it's a plan. So basically, and I told you that budget is actually a bigger chunk of this course. तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोर्स है, it's about planning, और अभी देखेंगे कि it's also about controlling. If you remember the course contents yesterday, then we talked about decision making tools. हमने कहा था ना, decision making किस तरह करते हैं. हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज आपने की है, वो अचीव हुई या नहीं हुई, और किस तरीके से अचीव करेंगे उसको. So this is basically controlling. So let's move on to control function. Now, control function is to control. Control what? Control your activities. Now, you plan something over here, and then in the next step, in the previous one, you were performing those steps. आप वो काम कर रहे थे ना. पहले आपने कहा कि ये काम इस तरह करेंगे, फिर दूसरे मैंने सबको काम असाइन कर दिया कि आपका ये काम, आपका ये काम, आपका ये काम. Now I need to see whether whatever I planned has been executed or not. जो मैंने प्लान किया था वो काम हुआ कि नहीं हुआ. Okay? The control function ensures that plans are being followed. So whatever I planned, whether we've done it accordingly or not. If we have not done it in that way, so then let's find out how can we take some corrective actions. या अगर हमने किया है उसी तरह, so let's improve it for the next time. अगली बार के लिए इसको और अच्छा कर दें, और अच्छा कर दें. Okay? So feedback in the form of performance reports. So I get feedback. परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, सीआर की कैसी थी, अब्दुल कादिर की कैसी, अब्दुल्ला की कैसी है. I'll see the performance report and I'll say नहीं यार, this is not according to the plan, so you need to do something extra. आपने ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है. अगर किसी की रिपोर्ट अच्छी है, उनसे okay, so this is according to the plan. Now next time के लिए इसको और अच्छा कर दें, इस तरह कर दें. Now all this can be done when I get some feedback. Okay, that compare actual results with the budget. So this is called as variance. कल हमने वेरिएंस की भी बात की ना. कल हमने वेरिएंस की बात की? No. नहीं बात की? Okay. So this variance is also important, but this is part of your advanced course में ये ज़्यादातर मैं पढ़ाता हूँ of management accounting, जो कि आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे because you are BBA students, BS accounting and finance वाले वो पढ़ते हैं. But you must understand that variance is actually, have you done statistics course? No. नहीं. अच्छा, चलें. So I will keep it basic then. Then variance is actually difference between actual and let's call it as budget or plan. चलें, plan. ठीक है? यानी जो actually आपने काम किया है और जो आपने प्लान किया हुआ था उसमें कोई फर्क है कि? If it is a positive one, for example, I told CR to go and buy ink for this marker जो हम नया बनाने वाले हैं, और मेरा प्लान है according to my plan, I made a budget, और बजट में मैंने इंक के पैसे रखे हैं 100 रुपए. So I gave 100 rupees to the CR. CR गया and CR bought the material ink for 50 rupees. So now there is a variance. Variance तो आ गया ना? But is it a favorable or unfavorable one? Favorable. So variances can be favorable or unfavorable. ठीक है? Okay. That compare results, actual results with the budget are an essential part of the control function. So basically, this is control function. Got the idea, class? Yes. Clear so far? Clear so far? कोई problem? हम इसको करते हैं, उसके बाद we'll take a 2 minutes break. ठीक है? Okay. So now, let's sum it up. अब सबको sum up करें. Okay. हम लोगों ने start कहाँ से किया था? Planning से.
So we formulated long and short term plans. That was the planning function. कर दिया हमने start. फिर हमने इसको क्या किया, इस plan को implement किया. So implementing plans, which is directing and motivating. फिर हमने क्या किया, कंट्रोल किया हमने उसको. कंट्रोल कैसे करेंगे? When you compare actual and budgeted. So you measure the performance first. मैंने कहा ना feedback आप उससे लेंगे, उनकी performance कैसी है, और फिर you would see whether you've done something right or not. If you did not do something good, तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा इसको change करें. So you compare actual to planned performance, and then once again you start again. So you keep on doing this again and again. And during all this time, you need to make decisions. You need to take decisions. Now this course, Management Accounting, is about planning and control. Okay? And decision. ये सारा ये कोर्स है. ठीक है? ये कोर्स सारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग एंड कंट्रोल. ये दो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक? And during all this time, we will be planning, we will be controlling, we will be making different decisions. So we will be using different tools, analytical tools हम सीखेंगे जिससे decision making में help out हो. और हम लोग बहुत सारी काम ऐसे करेंगे जिसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे होंगे. हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जिसमें हम लोग कंट्रोलिंग करेंगे. तो ये सारा कोर्स इसी के ऊपर है. Planning and control, keeping in mind the decision making which managers will be doing. Okay, pause करते हैं. ठीक है? So take a 2 minutes break, and we know what is management accounting. We have some idea what is management accounting. ठीक है? हमें कुछ ना कुछ पता चल गया ना कि management accounting क्या है. Management accounting. By the way, class, is there, because last time when we were actually making a video, there was an echo. So kindly pause it. I forgot to use the mic. So pause करें. Okay, let's start class. So now we have some idea what is management accounting. Now let's see how management accounting is different from financial accounting. अब आप तक आपने financial accounting पढ़ी हुई है, जो आप पढ़ रहे थे accounting 1, accounting 2, both of them were actually financial accounting. So now let's move to management accounting and see what actually is the difference between them. Now the first thing, when we were talking about management accounting, ठीक है, जब हम लोग इसको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, so we were talking about functions of management. Functions of management की बात कर रहे थे. So you have some idea that management accounting is actually for future. Future तो है, वो तो एक अलग बात है. ठीक है, future के लिए है because it is about planning ना and forecasting. So it is for future. So एक बात तो ये आ गई कि it is for future. लेकिन जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा था, that was basically कि it is for management, for managers. It is for managers. When you were doing accounting, so what you said, what is accounting? Why were you doing that accounting for? For whom? किसके लिए कर रहे थे आप? Data. तो आप data पे फिर क्या करते थे? Data को आप क्या करते थे? Interpret. फिर आगे क्या करते थे? Analyze. फिर आगे क्या करते थे? Entry. फिर आगे record, entry, then summarize आगे. और उसका रिजल्ट निकालते हैं. Result आगे. Result in the form of Interpreting the results. result in the form of financial statements. Financial statements. And financial statements were then published, displayed, published. So that means financial statements were published for public. So the users of financial accounting were external persons who were making their decisions on the basis of your financial statements. And we said it can be used by government, tax officials, याद है? और हमने कहा था कि आप क्या अपने managers भी इस्तेमाल करते हैं? Traders भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है? Auditors, investors, ठीक है? ये सब use करते हैं. But over here, when we talked about management accounting, planning and control. So planning and control would not be done by someone who's outside your organization. Yes, sir. जो आपके organization के बाहर है, वो आपके लिए क्या planning और control करेगा? This is actually for your management, for your managers. So the users of managerial accounting are actually your managers who are using this information for planning and control. Whereas financial accounting was for a vast majority, for lots of users. Could be internal,
could be external, बहुत सारे लोग. Clear? एक और बात अभी अब्दुल्ला ने बताई कि management accounting, because we are doing planning and control, so it is future oriented. अब ये काम हुआ नहीं है, हम सोच रहे हैं कि ये काम इस तरीके से करेंगे. Whereas financial accounting, when we started financial accounting, we said it is generated whenever something is incurred, whenever a transaction takes place. याद है? Transaction होगी तो रिकॉर्ड होगी और फिर blah 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 posting और जो भी है summarizing, interpreting. ठीक है? So that means the focus of financial accounting is historical. Perspective is historical कि जो काम हो गया उसको रिकॉर्ड कर. Whereas management accounting has a future emphasis. वो future के लिए होती है. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. फिर आप लोग जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो जो ही आप लोगों ने ये पढ़ा कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दिस इज व्हाट यू डू. उसके बाद आपने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े which were called as gap principles. Gap principles. So there were some gap principles. On the basis of those principles, you were performing financial accounting. So must follow gap principles. And then we have आगे पता नहीं आपने या आगे पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि इसके लिए कुछ और भी रूल्स एंड लॉज होते हैं which are governed by, which are given by your companies act. ये बात पता है? Yes. नहीं? आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या जो अकाउंटिंग है वो गवर्न हो रही होती है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है कंपनीज का एक्ट. क्योंकि ये कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस which are actually using this accounting ना, and they are publishing their annual reports, financial reports. So it should be uniform, and for that purpose SECP, Securities and Exchange Commission of Pakistan, पाकिस्तान में, और अगर बाहर है तो Securities and Exchange Commission SEC, would give you some rules or some laws or would give some guidelines. ठीक? And they are in the form of normally a company's act or a company's ordinance. पाकिस्तान में company's act है, पहले ordinance था act होता है. तो वो है और वो आपको गवर्न करता है कि आपने क्या काम करना है और वो मैंडेटरी होगा, कंपल्सरी आपने उसको फॉलो करना होता है. अगर वो आपको कहेगा कि ये एसेट इस तरीके से मेजर करना है तो आपने उसी तरीके से करना है. If you are in Pakistan and if you are making your financial statements which would be published in Pakistan, so you need to follow that. Okay? Whereas when we talk about managerial accounting, so there are no gap rules. कोई gap के principles नहीं है. Need not follow gap or any prescribed form. कोई format नहीं है. ठीक? बल्कि instead you will find out later on when we will be making income statements कि हम income statement के कोई नए format पढ़ेंगे, नए तरीके से income statements को बनाएंगे. But remember, my focus is managerial decision कि manager किस तरह उसको इस्तेमाल करता है. तो मेरा काम management को facilitate करना है कि management facilitate हो जाए decision लेते हुए. So I would generate information or reports which would be used by management for decision. I'm not concerned कि बार वाला क्या कहता है, बार वाले को तो मैंने ये रिपोर्ट देनी ही नहीं है. It's not meant for those people. It's only meant for management. ठीक है? So need not follow gap principles or any prescribed format, and there are no principles which need to be followed as laws. For example, Companies Act, Companies Ordinance, कोई नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के. ठीक है? वो आपके अपने लिए है. पब्लिश तो वो होना नहीं है कहीं पर. तो जब पब्लिश नहीं होना तो जिस तरीके से आप समझते हैं कि इसको मैं बना दूं उस तरीके से बना, ताकि मैनेजर को समझ आ जाए, ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके. गॉट द आइडिया ना? गॉट द आइडिया? अब जरा थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है? ओके. सो नाउ अनदर थिंग, व्हेन वी वर डूइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, so you were recording each and every transaction? Yes. Each and every transaction. Yes, sir. जो भी कुछ हो ऑर्गेनाइजेशन. Yes, sir. ठीक है? You spend 10 rupees on electricity, आप लिखेंगे उसको. You spend 10 rupees on raw material, आप लिखेंगे. Yes. You gave 10 rupees to labor, आप उसको भी लिखेंगे. तो ये देखिए अलग-अलग चीजें. कुछ चीजें मैन्युफैक्चरिंग की हैं, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं, कुछ चीजें फाइनेंशियल होती हैं, you paid interest. ठीक है? वो भी आप लिखेंगे. तो it will cover the whole organization. पूरी organization को कवर करता है. ठीक? Now let's talk about management. What is management accounting?
Management accounting would not be talking about whole organization at a time. What they will be doing? They will have segments. वो segments कर देंगे, departments कर देंगे, ठीक है? एक डिपार्टमेंट की क्या रिपोर्ट है? Is it making profits? उसका कितना कॉस्ट है? वो क्या कर रहा है? दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? So we have something which is called as segmentation or departmentalization in managerial accounting. Whereas financial accounting is for the whole organization. ठीक है? Got this idea? Sir, so it can be like एक segment के लिए हम managerial accounting use करें, दूसरी क्या हम करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करें? We will divide the whole organization into 3 segments, A, B, C, let's say. इसके क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, and then you will have a total. In financial accounting, we did not do it like that. We said the electricity bill is rupees 50,000 for the whole organization. That's it. उसमें मैंने ये नहीं कहा कि हर डिपार्टमेंट का कितना कितना बिल आ रहा है, ठीक है? हर सेगमेंट का कितना बिल आ रहा है. यहाँ पर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट A is doing something, let's say कोई एक काम करता है, उसका बिल आया है 10,000. डिपार्टमेंट B is doing something else, उसका बिल है 30,000. C is doing something else, उसका बिल आ गया 40, 10, 50. ठीक है? ये इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं, ये इंफॉर्मेशन यहाँ है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोर डिटेल्ड. वो डिटेल्ड होगी, बड़ी, उसके अंदर एक एक चीज होगी. फिर इसको मैं और भी ब्रेक डाउन कर सकता हूं. फिर मैं ये कहता हूं कि डिपार्टमेंट वाइज तो हो गया, लेट्स डू इट प्रोडक्ट वाइज. मैं 10 प्रोडक्ट्स बनाता हूं, ठीक है? प्रोडक्ट 1 कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, प्रोडक्ट 2 कितनी यूज करता है, 3 4 5 6. So I can do it like that as well. देखिए सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स मैंने बनाए. ठीक? फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने कहा था इलेक्ट्रिसिटी का बिल 10,000 रिकॉर्डेड एज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000 कैश 10,000. याद है? और उसको उठा के ले जाएंगे कुछ. सिर्फ ये काम. यहां पर मैं अलग अलग करता हूं सो दैट मैनेजर कैन मेक अ डिसीजन. यार ये प्रोडक्ट क्यों ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है, ये क्यों कम करता है, इसको जरा कम करो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसकी कॉस्ट ज्यादा है, इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर दो, फॉर एन एग्जांपल. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू डू थिंग्स इन मैनेजमेंट. ठीक है? क्लियर सो फार? So you don't have simultaneous at the same time. हाँ, साइमल्टेनियस चल रहे होंगे. ये नहीं है कि एक हो रहा होगा एक नहीं हो रहा होगा, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे. ठीक है? रिकॉर्डिंग कर रहा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लर्क, वो रिकॉर्ड कर देगा जो जनरल ट्रांजैक्शन. ठीक? फिर बाकी उसकी डिटेल्स वुड बी विद समवन हु इज इन दैट डिपार्टमेंट. वो जो डिपार्टमेंट का हेड है या आपका एक मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो बंदा है, अभी आगे पढ़ते हैं वो कौन है और वो कैसे काम करता है, वो आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देगा. वो उठा के मैनेजर को देगा, मैनेजर वुड मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट. गॉट द आइडिया ना? ओके, दो चीजें. अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए, आपको याद अगर हो तो अगर एक छोटा सा भी कोई एक्सपेंस आप करते हैं या कोई रेवेन्यू है, यू वुड हैव टू रिकॉर्ड इट, क्योंकि आखिर में यू नीड टू बैलेंस द बैलेंस शीट, तो आपको करना पड़ेगा. या अगर यू वुड से इट्स इमटेरियल तो आप उसको ग्रुप करके एक साथ कर देंगे, बट स्टिल यू नीड टू बी प्रिसाइज. सो द एम्फेसिस वाज ऑन प्रिसिशन. ठीक है? प्रिसाइज हो गया, आपने सब चीजें लिखी हैं, रिकॉर्ड कर. Whereas when we talk about managerial accounting, precision is important, but what is important is to get the information on time. देखिए, मैनेजर को लेना है डिसीजन, उसने डिसीजन आज लेना है. आप प्रिसिशन के अंदर लगे रहें और 2 दिन बीच में गुजार दें और 2 दिन बाद मैनेजर को जाके रिपोर्ट देंगे, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट, तो वो कहेगा मैं क्या करूं, डिसीजन का टाइम तो गुजर गया. ठीक? सो द एम्फेसिस इज ऑन timeliness. You need to give that information on time. I wouldn't care that much about precision, although it's important, but I would care more about timeliness, so that I can make the decision on time and I can save cost or I can earn more profits. Got the idea? Yes, sir. Okay. Verifiability. Now, financial accounting has an emphasis on verifiability. ऑडिट का सुना है? Yes, sir. अच्छा, उसमें आप क्या करते हैं? Checking गवर्नमेंट कब So you are actually checking Checking
Examining, so you are actually examining each. Yes. आप कहते हैं अच्छा 10 रुपए का बिजली का बिल आया तो इसके साथ बिजली का बिल लगाओ ताकि मैं चेक करूं कि वाकई इट्स 10 रुपीस और नॉट। अच्छा ये आया, इसको किसने ऑथराइज किया पेमेंट, उसका वो लगाओ, साइन होगा, वेरीफाइड। तो एक्चुअली आई एम verifying things. When we talk about managerial accounting, so my emphasis is more on planning and control. So it should be relevant for planning and control. If it is relevant for planning and control, this is what I need. If it is not, तो यार मैंने क्या करना है, इस ये इन्फॉर्मेशन है मुझे नहीं चाहिए, प्लानिंग के लिए भी इसकी जरूरत नहीं है, कंट्रोलिंग के लिए भी इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा के रखो, ये मुझे चाहिए नहीं, मेरा काम नहीं है, ठीक है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम, ठीक? So my emphasis is more on planning and control. I would not be worrying about all the things which are happening in the organization. I would be worried about that information or that data which I need or which I'll be using for planning and control purposes or decision making. जी सर यहाँ पे emphasis on timeliness. तो अगर for example एक specific time के लिए मुझे results चाहिए तो they may not be accurate. देखें, हम ये नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल गलत है, हम कह रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो exactly 0.001 के नजदीक आके precise, just make it 1 यार बस, मुझे जल्दी से ला के दें, डेटा ला के दें ताकि मैं डिसाइड करूं, Estimate. ठीक है? एस्टिमेट, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर एस्टिमेट्स हो गए, याद नहीं हमने कहा था कि प्लानिंग है, प्लानिंग इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सम एस्टिमेट्स, फोरकास्ट इज एन एस्टिमेट, ये नहीं, ये तो होता ही एस्टिमेट, ठीक? तो यहाँ पे मतलब ये है कि मुझे इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होना, मुझे एक तो टाइम पे चीज चाहिए और वो चीज चाहिए जो मुझे इंपॉर्टेंट है फॉर प्लानिंग, कंट्रोल, so that I can make decisions. Got the idea? So this is the difference between financial accounting and managerial accounting. Okay. अब ये managerial accountants होते किधर, ठीक है? ये organization में कहाँ पर हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या काम? So now this is the hierarchy of an organization, ठीक है? Organization का structure which you must be familiar with. देखा हुआ ना ये? Yes. Okay. So this is the organizational structure and it's more decentralized. So decentralization तो पता है क्या चीज होती है? Where powers are distributed, ठीक है? Authority, सबके पास authority होती है. So decentralization is the delegation of decision making authority throughout an organization. So this is what a decentralized organization would look like. It would be more flat rather than a tall structure. Tall structure इतना नहीं होगा, flat structure होगा. Board of directors, we have board of directors, we have president, and then we have different departments. Purchasing department personnel, which is the HR department. These are the operations जो manufacturing होती है basically. Chief financial officer जो आपका finance का section है, and then under chief financial officer we have a treasurer and a controller. अब ये दो बंदे हमारे काम हैं, ठीक है? Treasurer and controller. अब हम इसके ऊपर discussion अपनी रखेंगे कि ये लोग क्या काम करें. हम लोग जो बात भी करेंगे इस कोर्स के अंदर, most of the time we will be talking about operations actually. ऑपरेशंस किस तरह करने हैं आप लोगों ने, आप लोग प्लानिंग क्या कर रहे होंगे, किस तरह अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे और उसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस कोर्स. लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप्स, ये याद है? लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप्स, व्हाट आर लाइन Manager and employees. Line of authority reporting. हाँ तो फिर सो व्हाट अबाउट लाइन ऑफ अथॉरिटी रिपोर्टिंग, व्हाट अबाउट Taking action. Supervision करें एक दूसरे के ऊपर. नहीं और कुछ नहीं समझ आ रही? देखें, आप जब काम कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, so some people are actually working on that main thing which you are doing. For example, take the example of Mnfctrg. So what are we doing? What is our strategy? Or what is the game plan? या main objective क्या है? Teaching, let's say education. Education, by the way, it's education and research. Let's say education. तो education अगर है तो इसमें main काम कौन कर रहा है? Teachers. हम लोग main काम कर रहे हैं. So line positions are directly related to achievement of the basic objective. Basic objective of Mnfctrg, let's say थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि it's only education. तो हम लोग वो कर रहे हैं और वो जो लोग ये काम कर रहे हैं they are actually line positions. तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी सारे लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कर रहा है, फाइनेंस का सेक्शन क्या कर रहा है, एचआर का सेक्शन क्या कर रहा है, कैंटीन क्या कर रही है, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये तो
एजुकेशन तो नहीं प्रोवाइड कर रहे, supporting. So staff positions support and assist line. So this is the main objective of the organization, line position, and these are the support. They are actually supporting the main function. So example, cost accountants in manufacturing plant. मैंने आपको कैंटीन की एग्जांपल दी, HR की एग्जांपल दी, फाइनेंस की एग्जांपल दी, ठीक है? They are all staff positions. Clear हो गया? Line and staff. Clear है class? Okay. Chief Financial Officer. मैंने आपसे कहा ना कि अभी हम लोग थोड़ा सा अपनी डिस्कशन इस जगह पे, ठीक है? So that we know who is the Chief Financial Officer, who is the Treasurer, and who is the Controller. आप नजर आ रहा है? Yes, sir. Okay. So let's move on. Okay, Chief Financial Officer. Now this Chief Financial Officer is actually ये finance department का head होगा. Okay. So a member of the top management team. Top management team है for finance, and what's he responsible for? Providing timely and relevant data to support planning and control activities. ये सारा जो data है जो आपको चाहिए for planning and control activities और relevant data और timely data. देखिए हमने कहा ना कि एक मेरे काम का कौन सा data है, मुझे वो चाहिए. I'm not concerned with the other data, and I'm concerned with the data which I get on time. टाइम पे मुझे डेटा देगा. अगर टाइम पे आप मुझे नहीं देंगे मेरा कोई फायदा नहीं है. डिसीजन तो मैं ले चुका हूं, अब क्या फायदा इस डेटा का? सो प्रोवाइडिंग टाइमली एंड रेलेवेंट डेटा और किस चीज को सपोर्ट करने के लिए? दिस इज व्हाट आई सेड इज मैनेजमेंट अकाउंट, प्लानिंग एंड कंट्रोल. ठीक है? प्लानिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज. एंड देन दे आल्सो आर कंसर्न्ड विद फाइनेंस. सो हु एक्चुअली इज डूइंग दिस? लेकिन ये फंक्शन किसका है? ये क्या चीज है? अकाउंटेंट्स का. किस अकाउंटेंट का? फाइनेंशियल अकाउंटेंट का. सो रिमेंबर दिस इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो हेड है ना? यस सर. तो वो तो दोनों काम कर रहा होगा, लेकिन उसके जो नीचे हमने दो लोग पढ़े थे, कौन कौन? ट्रेजरर एंड कंट्रोलर. उनकी ड्यूटीज अलग अलग. वहां पर एक ज्यादातर काम कर रहा होगा फाइनेंशियल, एक काम कर रहा होगा मैनेजरियल. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया. ओके, लेट्स मूव ऑन. ओके, आर यू familiar with these terms or these theories? Lean production, theory of constraints, Six Sigma. सर लीन प्रोडक्शन अभी नहीं पढ़ी? लीन स्टार्टअप मैनेजमेंट. Sure. लीन स्टार्टअप मैनेजमेंट. सर ये लीन प्रोडक्शन तो नहीं है कि जिसमें आप इनपुट्स मतलब कम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट देना, वो चीज नहीं है. नहीं, अब मुझे another concept. Lean startup, lean chicken they can have. नहीं यार. Sir, lead production, production management. जी, let's listen to her. What's your name? नूर. जी. Sir, हमने पढ़ा था लेकिन बाकी. लेकिन अब याद नहीं. Yes, sir. तो बिल्कुल एक छोटी सी definition. छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, वो छोटी डेफिनेशन भी याद नहीं. Okay, class. This is your third semester, right? Yes sir. And by the time you graduate, you would have studied 8 semesters. Yes sir. 8 multiplied by 5 equals 40 courses. ठीक है? शायद इस कोर्स के बाद शायद मैं आपको ना मिलूं आपके कोर्स के लिए, आपके कोर्सेज के लिए. और मेरे कोर्सेज आर मोर फोकस्ड ऑन एडवांस्ड लेवल, और जो उनके एडवांस लेवल का कोर्स है, जिस तरह इसका एडवांस लेवल का कोर्स है एडवांस मैनेजरियल अकाउंटिंग, वहाँ पर या एडवांस कॉर्पोरेट फाइनेंस वहाँ पर, और इतना एडवांस शायद आप लोग ना जाएं. शायद वो ज़्यादातर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले लोग पढ़ रहे होते हैं, तो मैं वहाँ पर होता हूँ ज़्यादातर. लेकिन when you progress and when you move on to your 7th or 8th semester, you will get courses which would be, for those courses the prerequisite might be different courses at lower levels. तो आपको वो courses याद नहीं होंगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी. तो इस वजह से make it a habit कि आप लोग शुरू से आखिर तक जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो आपको दिमाग में बैठ जाए. ठीक है? You should remember those things. ठीक? Okay, let's start. First of all, with lean production. Now, what is lean production? Now, before we start with the lean production, let's talk about a business process. Business process क्या होता है? Business process. What's a business process?
बाइंग एंड सेलिंग, आप कह रहे हैं बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए? नो नो जो स्टेप्स को लेता है, स्टेप्स लेता है किस चीज के लिए? जो टास्क को पूरा करने के लिए, किस टास्क को पूरा करने? Production. प्रोडक्शन। So actually you're talking about manufacturing, production. जी। So then what is actually that process? वो process क्या है? देखिए, if you are doing a business or if you are in a business, so what are actually you doing? Implementing the plans. Fulfilling the needs of. वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं? काम, एक्टिविटी, जहाँ प्रोडक्ट्स को हम फिनिश प्रोडक्शन चेंज करते हैं। Selling. सेलिंग, प्रोडक्शन, क्या इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन का? Accounting. अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, डिजाइनिंग, डिजाइन नहीं करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, परचेजिंग, ठीक है, so there are lots of things. So a business process would actually be the way to do any process, कोई भी process, or in other words series of steps, कि क्या काम मैं करूंगा कि वो एक काम हो जाए जो कि कोई एक प्रोसेस है. That process can be manufacturing, marketing, HR, finance, जो भी process हो. So a business process is a series of steps that are followed in order to carry out some task in a business. Now what is that task? That task can be anything. Anything. R&D. Research and development. Product को डिजाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके बाद उसको मार्केट करना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करनी है प्रोडक्ट, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस करनी है, कस्टमर सर्विस. तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये सब प्रोसेस. तो अगर ये सब प्रोसेस हैं तो बिजनेस प्रोसेस ये सब है. तो इसमें अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम को करने का कोई तरीका है कि किस तरीके से इस काम को करेंगे स्टेप बाय स्टेप, दैट इज एक्चुअली अ बिजनेस प्रोसेस. और जब ये सब फंक्शंस इकट्ठे हो जाएं, so what do we call it? They make up the value. Because you can easily see कि हर जगह पर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है. ये मार्केट जो यहाँ तक पहुंचा है, ये इस तरह नहीं पहुंचा. पहले इसका R&D, ठीक है, किसी ने रिसर्च की, किसी ने कहा ये मार्कर इस तरह बनना चाहिए, इसके अंदर ये वाली ईंट डालनी चाहिए, फिर इसको डिजाइन किया कि इसकी बॉडी इस तरह होनी चाहिए, कैप इस तरह होना चाहिए, फिट हो जाए, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर इसको मैन्युफैक्चर किया. So at each and every step value was added. इसके अंदर value add हो रही. पहले मैंने इस पर 2 रुपए लगाए, इस पर रिसर्च किया, फिर मैंने 3 रुपए लगाए, इसका डिजाइन बनाया, फिर मैंने 4 रुपए लगाए, इसके रॉ मटेरियल खरीदे, मैन्युफैक्चरिंग की, फिर मैंने मार्केटिंग वाले को 1 रुपए दिया कि इसको मार्केट करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाले को 8 आने दिए कि इसको 50 पैसा से इसको डिस्ट्रीब्यूट करे हर जगह पे, फिर आफ्टर सेल सर्विस वाले को मैं हर वक्त देता हूँ 25 पैसा पर कॉल जो कि वो रिसीव करते हैं. So all of this is actually adding value to this product. ठीक है? So this is actually my value. Got the idea? कॉफी आपको मिलेगी कैफे में. और आपसे मैंने पहले कहा था कि 90 मिनट्स वुड बी 90 मिनट्स, 5 मिनट की ब्रेक आपको दूंगा दरमियान में, बाकी टाइम हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है? तो ये बात याद रखें, पढ़ना पूरा है. ठीक, अभी 7 मिनट रहते हैं, हम इसमें से एक थ्योरी कर सकते हैं. दिस इज इंटरेस्टिंग वन एंड इट्स एन ईजियर वन. तो इसको पहले करते हैं और आसान है, आपको पता है, लेकिन शायद आपने रियलाइज नहीं किया कि इसका नाम नहीं है. ठीक है? आप लोग प्रोडक्शन, मैंने आपसे कहा था यू मस्ट नो प्रोडक्शन. हाउ मेनी ऑफ यू, और कल मुझे किस किसने कहा था उसको प्रोडक्शन का पता है? ओके शाजिद, लेट्स टेल मी अबाउट प्रोडक्शन. हाउ डू यू एक्चुअली डू दिस प्रोसेस? ये प्रोडक्शन कैसे होती है? अच्छा, अब एक मिनट, before you take raw material, let's take example of one particular product which you talk about. आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे? स्टील के बारे में. तो अब मुझे ये बताएं कि स्टील का रॉ मटेरियल लेने से पहले आपके दिमाग में ये कैसे आया कि स्टील मैन्युफैक्चर करनी चाहिए? कहां से आया ये? कंपनी जो, लेकिन कंपनी किस बेसिस पे डिसाइड करती है कि स्टील बनाना है? वो छोले क्यों नहीं बनाती? लोगों की डिमांड. ठीक है? सो दिस व्हाट यू नीड टू थिंक ना. यू वुड नॉट सिंपली जस्ट गो एंड के यार पिज्जा बनाता हूं, पिज्जा सेल करता हूं. वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? दिस व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट.
ठीक है, ओके, चलें आगे चलें। पहले आपने लोगों की डिमांड देखी, फिर आपने स्टील बनाने के लिए क्या किया? रॉ मटेरियल लिया, फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग का। उसमें आप लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल और कुछ और केमिकल्स वगैरह मिलाते हो, वो सब रॉ मटेरियल, सब मटेरियल डालते हैं, फिर आगे फिर प्रोडक्शन हो जाती है। प्रोडक्शन कौन करता है? इंजीनियर सब जो लेबर। लेबर। सो यू फर्स्ट यू हैव मटेरियल, देन यू अप्लाई लेबर, आगे देन तैयार हो जाती है। तो लेबर बस उसको खुद ही तैयार कर लेती है, मशीनरी। अब उसको आगे हम पढ़ेंगे, उसका एक अलग सा नाम है, उसका नाम आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन चलिए दिमाग में रखिए कि देयर इज अ प्रोसेस एंड सम मशीन इज इन्वॉल्वड एज वेल। आगे चलें। देन प्रोडक्ट की टेस्ट होती है कि ये सही बना है, ठीक है, एंड देन इट्स फिनिश, ओके, मार्केट में आ जाते हैं सेल के लिए। मार्केट में ले जाते हैं सेल। ठीक, क्लियर, अंडरस्टूड ईच एंड एवरीवन? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोसेस नाउ। Right. This is the process. First of all, you forecast. पहले देखना सेल्स कितनी हो, make a forecast, make an estimate, find out, मार्केट में जाएं, पूछें कितना स्टील चाहिए लोगों को, उसके मुताबिक मैन्युफैक्चर। Then order components, स्टील के अंदर क्या क्या चीज चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल चाहिए स्टील का। By the way, what's the raw material for steel? What's the raw material for steel? स्क्रैप आप स्क्रैप से बनाते हैं, ओके, स्क्रैप इकट्ठा करें और फिर उसके अंदर इसने कहा कुछ और केमिकल्स डालेंगे, उसको मिला मंगवाएं पहले ऑर्डर कंपोनेंट्स, फिर उसको आप बनाएंगे, यू पुट इट इन द स्टोर, ठीक, प्रोड्यूस गुड्स इन एंटिसिपेशन ऑफ सेल्स, जितने सेल्स हैं उसके मुताबिक आप प्रोडक्शन करेंगे, उसको उठा के जो फिनिश, देखें यहां पर ये जो चीज है दिस इज रॉ मटेरियल। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल जब आएगा यू पुट इट इन द स्टोर एंड व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो स्टोर से निकाल कर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट, ओके, सो नाउ आई विल पुट इट इन अनदर स्टोर। पहले उस स्टोर में था रॉ मटेरियल, यहां पर आया ये फैक्ट्री का एरिया, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग की, इसके ऊपर कुछ मशीन्स लगाई हमने, कुछ लेबर लगाई, इसके बाद इट मूव्स ऑन टू द अदर स्टोर व्हिच इज एक्चुअली फॉर फिनिश्ड गुड्स। This was raw material. This is finished. So try to distinguish between the two. ये हो गया make sales from finished goods. Clear? सारा process clear? This is a ऊपर देख लें traditional push manufacturing company. This is traditional production जो आप करते आ रहे हैं, जो आपको बताया गया है, जो शायद इतना अच्छा नहीं। ठीक है? So now let's talk about something else which is called as lean production. ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये जो प्रोसेस है इसको एक दफा फिर देख लें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमी, ट्रेडिशनल पुश मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हमने क्या किया, वी हैव लार्ज इन्वेंटरीज, क्योंकि उसने कहा था कि पहले रॉ मटेरियल मंगवाओ ना और फिर उसको उठा के स्टोर में रख दो, तो उसको मैंने स्टोर में रख दी। फिर मुझे किसी ने कहा कि रॉ मटेरियल जो स्टील है उसकी कंजम्पशन का जो डिमांड है दैट इज इन हाउ मच, 10 मेट्रिक टन कितना होगा, 100 मेट्रिक टन कितना होगा, डिफरेंट होता है, चलिए कुछ मेट्रिक टन्स है, तो मैं उतना मैन्युफैक्चर करूं, ठीक है। तो इसका मतलब कि व्हेन आई get the raw material, I have something which is called as raw material inventory. I have something which is called as raw material inventory. So this is the first type of inventory which I have. Materials waiting to be processed. ये अभी तक से process नहीं हुआ. That's why it is called as raw material. Raw है. Yes sir. फिर मैंने जब इसके ऊपर process start किया, so this is called as work in process inventory. So this is the second type of inventory which I have in a manufacturing concern, and this is partially completed. Remember, it's not completed. अगर ये complete हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? Finished goods inventory, which is the third type of inventory which I have. So it is partially completed products requiring more work. Still, some work needs to be done. इसके ऊपर कुछ काम और करना है before they are ready for sale. Once they are finished, they are called as completed products awaiting sale. So finished goods. ठीक है? So you must understand, in a manufacturing concern we have
three types of inventories: raw material, work in process, ठीक है? And normally in a traditional system, which is also called as push manufacturing, इसमें inventories बड़ी inventories होती। इसके against मेरे पास एक और सिस्टम है जो लीन प्रोडक्शन कहलाता है और जिसको हम ये पुल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए वो पुश था ना, ये पुल मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नाउ व्हाट इज दिस पुल मैन्युफैक्चरिंग? अब इसको देखिए। The 5 steps process results in a full manufacturing system. ये 5 steps इससे पहले आए हैं जो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। That reduces inventories. How would it reduce inventories? अब जरा सिस्टम को गौर से, मैं कोई चीज पहले से नहीं कहूँगा। I wait till a customer comes in and orders. कस्टमर कहता है मुझे इतना स्टील चाहिए, मैंने बनाना है घर और उसके लिए इस टाइप का स्टील चाहिए और इतना चाहिए। Customer places an order and then I make a production order. फिर मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, अब ये चीज बना दो, ये उठाकर मैं अपनी प्रोडक्शन टीम को दूँ। अब ये चीज बनाए, अब वो तो बना नहीं सकेंगे जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा, so they would generate component requirements. वो कहेंगे यार इतने finished goods के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, हिसाब लगाएंगे, then they would order raw material. रॉ मटेरियल आएगा मेरे पास, लेकिन याद रखें जितना रॉ मटेरियल आएगा वो सारा का सारा इसी ऑर्डर के ऊपर लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लार्ज इन्वेंटरी की जरूरत नहीं, सो इट रिड्यूसेस इन्वेंटरी, ठीक है ना? इन्वेंटरी रिड्यूसेस। With inventory I have a cost associated with inventory which is called as keeping cost. so what do you actually call it? जब इन्वेंटरी को मैं रखूंगा तो उसके ऊपर कॉस्ट कौन सी आएगी? नहीं उसका नाम क्या है? इसने सही बोला है लेकिन उसका नाम क्या है? cost of ये CGS is cost of goods sold। इन्वेंटरी को आप रखते कहां पर है? स्टोर में। स्टोर को आपने क्या करना होगा? स्टोरेज कॉस्ट, वेयर हाउस की कॉस्ट, स्टोरेज की कॉस्ट, ठीक है? स्टोरेज की कॉस्ट में उसका रेंट आ जाएगा, वहां पे आपने बिजली लगाई होगी, बिजली आ जाएगी, वहां पे आपने एक चौकीदार बिठाया होगा, चौकीदार आ जाएगा, ये सब आपकी स्टोरेज कॉस्ट है। नाउ रिमेंबर इन द प्रीवियस सिस्टम व्हिच वाज अ ट्रेडिशनल सिस्टम, स्टोरेज बहुत थी तो उसकी कॉस्ट ज्यादा। यहां पे स्टोरेज है नहीं, आप जो चीज मंगाएंगे उसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कर देंगे, so it will reduce inventory to a minimum inventory। तो आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो भी मिनिमम। ओके, आगे चलें। प्रोडक्शन begins as parts arrive। प्रोडक्शन जो ही खत्म हुई, हमने पिछली बार कहा था प्रोडक्शन खत्म हो गई इसको उठा के रख दो दोबारा स्टोर। अब ये प्रोडक्शन जो मैंने की ये मैंने किसके लिए की थी? कस्टमर के लिए। उसको फोन करूंगा आज उठा, वहां तो उठा ले। तो क्या मुझे वो दोबारा दूसरी कॉस्ट जो दूसरा वेयर हाउस है फिनिश गुड्स का, उसमें दोबारा इसको ट्रांसफर करने की जरूरत है? नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो शायद ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए वो आके अपनी चीजें ले जाएगा। आई एम डन, बस। सो वंस अगेन माय कॉस्ट रिड्यूसेस, ठीक है? सो पुल मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसेस इन्वेंटरीज, डिक्रीजेस डिफेक्ट्स, reduces wasted effort and shortens customer response times। ये बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल नहीं, नेक्स्ट मंडे। ओके ओके।